Now today let's start with chapter number 1, our country India. In this chapter we will study about our country India, which is the 7th largest country in the world and the 2nd populous country. Now let's start with the chapter, and its capital is New Delhi. This is the political map of India. In this we have different states capital, we have bordering country of India. Now India is a country, it is unique in its physical culture and diversity. It lies in the continent of Asia, or it is the southern part of the country. It has Bay of Bengal in the east, Arabian Sea to its west, and Indian Ocean into the south. Okay, here we have Arabian Sea, west. In east we have Bay of Bengal, and in south we have Indian Ocean. These are the three oceans. Great Himalayan Range forms our Indian boundary in the north. ये आपकी जो Great Himalayan Range है, यहाँ पे lie करती है. ये एक boundary form करती है. It forms a boundary. ठीक है? Andaman and Nicobar Island, which lies in the Bay of Bengal, and Lakshadweep Island in the Arabian. Indian जो island है here in the Arabian Sea, we have Lakshadweep Island, and in Bay of Bengal we have Andaman and Nicobar Island. And capital of Andaman and Nicobar is Port Blair. Kanyakumari, it is the southernmost part of the mainland of India. The southernmost tip is Pygmalion Point. ठीक है, जो आपकी कन्याकुमारी है वो southernmost point है mainland का, and southernmost tip है जो इंडियन की वो है आपका Pygmalion Point, जिसे हम इंदिरा Point भी कहते हैं, which is also known as Indira Point, which is the part of Great Nicobar Island. जो किसका part है, यहाँ पे Great Nicobar Island lie करते हैं, उनका part. Indira Point got submerged. तो submerged हो गया था tsunami के through in 2000. In 2004, it submerged. Our country India, which is the 7th largest country in the world, 7th largest किस terms में, geographical area के terms. And it has been attraction of the Western explorer and Christopher Columbus. जो Christopher Columbus थे, he was an Italian explorer. He aimed to find a sea route to India. Instead, he landed in the island group of North America and named it West Indies. ठीक है, सो किसके बाद क्या नेम दे दिया, वेस्ट इंडीज दे दिया आफ्टर इंडिया. एंड द हिमालय माउंटेन रेंज इट स्ट्रेचेस नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. और ये आपका कहाँ से रन करता है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ. और मैंने आपको शो भी करा था. और ये क्या क्रिएट करता है, डिस्टिंक्टिंग लैंडमार्क्स जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के. It includes Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and India and its neighboring country not only share physical features. ऐसा नहीं कि वो खाली physical features share करती है, उसके साथ साथ वहाँ का climate, vegetation, culture और economic threats जो है सब कुछ क्या करती है, share करती है. If we talk about location, India is located to the north of equator. Equator के north पे, which is the longest latitude. It is also located in the east of longitude. जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट में लोकेटेड है, एंड इंडिया इज लाई इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड. ये कहाँ लाई करती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड. दिस इज योर नाउ फिजिकल फीचर. वी हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. वी हैव ग्रेट हिमालयन व्हिच इज आल्सो नोन एज एडॉप ऑफ स्नो, एंड देन वी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट दैट इज थार डेजर्ट, एंड देन वी हैव डेक्कन प्लेट्यू, वी हैव कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड लास्ट वी विल सी द सदर्न प्लेट्यू, which is known as, these are your great Himalayan. यहाँ पे आपके हिमालय, मिडल हिमालय और लेसर हिमालय. ये क्या है, ये आपका प्लेन वाला एरिया. दिस इज योर प्लेन एरिया. ये आपका माउंटेनियस रीजन है. These are your northern plains. ये आपके northern plains हो गए. This is your Deccan Plateau. This is your Thar Desert. ठीक है. This is your coastal plain. This is western coastal plain and this is eastern coastal. Right? Now let's study about them one by one. Now let's talk about political division. India we have divided into 28 states and 8 UT, and the national capital of Delhi जो है वो आपकी क्या है, Union Territory. The states and Union Territory are further divided into districts and all small administrative units, and it proposes for easy government. देखो ये क्यों बनाया गया है कि जो गवर्नेंस हो वो कैसी हो सके, easy हो. Then we have climate. Climate is regular pattern of weather condition in a particular place. The population of place depends upon great extent of climatic conditions. Things like dress, lifestyle and type of people depend upon the climate, place where they live. People adjust to their lifestyle and to changes of weather condition
इंडिया होल्ड्स लार्ज पॉपुलेशन मेनली बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। तो इंडिया के पास जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स फेवरेबल क्लाइमेट, क्योंकि अगर जो क्लाइमेट है वो कैसा है, फेवरेबल है मोस्ट ऑफ द पार्ट। नाउ सीजन इन इंडिया, बेसिकली इंडिया में हम 3 सीजन ही करते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन एंड मॉनसून सीजन। एंड वी हैव 5 सीजन, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून, ऑटम एंड समर। नाउ विंटर सीजन, ड्यूरिंग दिस सीजन जनरली कोल्ड थ्रू आउट द कंट्री। ये कब बिगिन होता है, नवंबर एंड एंड्स इन फरवरी। टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे ही आप मूव करोगे फ्रॉम कन्याकुमारी इनटू लद्दाख, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे डेज शॉर्टर होते हैं, नाइट लॉन्गर होती है। आपको याद रखना, विंटर में डेज आर शॉर्टर, नाइट आर लॉन्गर। साउथ इंडिया इज वार्मर एज कम्पेयर टू नॉर्थ ड्यू टू नियरनेस ऑफ द सी एंड। देखो साउथ इंडिया जो है वो ज्यादा वार्म है एज कम्पेयर टू नॉर्थ, बिकॉज एक तो सी बहुत पास है और दूसरा वो इक्वेटर के पास। The northern states and Union Territory of India experience extreme cold as they are far away from the sea. और जो नॉर्थ वाला स्टेट्स है वो ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहां पे, क्योंकि वो क्या है, सी से दूर है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या होती है, स्नोफॉल। Why there is a snowfall? Because they are situated at the high altitude. The month of January records the lowest temperature during winter. सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो कब होता है, आपके जनवरी में। देन वी हैव समर। इन समर कोल्ड विंटर ग्रेजुअली शिफ्ट्स टू स्प्रिंग एंड देन टू समर व्हेन इट बिकम्स वार्म। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बिगिन, मतलब जो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बिगनिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो कब से शुरू हो जाती है, मार्च से। एंड नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं दे रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर एंड दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द, क्योंकि दूर से सी से क्या है, दूर लोकेटेड है। एंड द कोस्टल प्लेन एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ, क्या होता है कि जो सी वाटर में जो इवापोरेशन होती है वो बहुत ज्यादा रैपिड है। एंड अ हॉट लोकल विंड जो आपके डेजर्ट ऑफ राजस्थान से चलती है, जिसे लू कहते हैं, ये कहाँ जाती है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ करती है, मूव करती है। एंड समर सीजन लास्ट टिल जून तक चलता है। देन वी हैव मॉनसून सीजन। The special features of Indian climate is that wind changes their direction from season to season. Wind क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को सीजन टू सीजन चेंज करती है। ठीक है, एंड इन समर द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड कैरिंग लॉट्स ऑफ वाटर एंड स्लैश इट। द विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट। ये जो विंड्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट विंड्स। ठीक है, साउथ से आ रही है, वेस्ट से आ रही है। ये क्या है आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून, कहाँ से आ रही है, साउथ से आ रही है। ये क्या है आपकी मॉनसून, क्या है, साउथ वेस्ट। नाउ फर्स्ट इज साउथ वेस्ट मॉनसून। विंड स्टार्ट फ्रॉम इंडियन ओशन एंड एंटर इंडिया बाय बिगनिंग ऑफ जून। ठीक है, इंडियन ओशन से स्टार्ट करती है और जून की बिगनिंग से होती है। एंड द वेट शेप ऑफ इंडिया इज साउथ मॉनसून इज जॉइंड टू ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कुछ अरेबियन सी से जाते हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल से आते हैं। एंड द अरेबियन सी ब्रांच जो है आपकी वो ब्रेक करती है ऑन द वेस्ट कोस्ट इन जून एंड इट ब्रिंग्स कूलर बट मोर ह्यूमिड वेदर और हैवी रेन लेके आती है कोस्ट। देन फ्रॉम हियर इट रीचेस मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ एशिया बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पहुंच जाती है। एंड देन द अदर ब्रांच नोन एज बे ऑफ बंगाल ब्रांच मूव्स नॉर्थवर्ड एंड स्प्रेड ओवर मोस्ट ऑफ असम बाय फर्स्ट वीक ऑफ मई। और ये क्या लेके आती है, हैवी रेन लेके आते हैं, कहाँ, गारो, खासी, जैंतिया, और मासिंगराम जो आपका चेरापूंजी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा और हैवीएस्ट रेनफॉल होता है इंडिया। जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप क्रॉस करोगे ग्रेट हिमालयन रेंज को, इट डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड टुवर्ड दिल्ली एंड टू ब्रांचेस नाउ मर्ज एज सिंगल करंट एंड ब्रिंग्स रेन टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ नॉर्थ। ये एक सिंगल करंट में चेंज हो जाती है और रेन लेके आती है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन जुलाई। मॉनसून रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। और हम ये भी मानते हैं कि भाई फार्मर देखा रेन के लिए बहुत मतलब मॉनसून के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। प्रेडिक्शन ऑफ द अराइवल ऑफ मॉनसून आर eagerly waited by farmers. Most part of the country receive rainfall from the southwest monsoon during the month of June to September. Right? कहीं कहीं क्या होता है, जून टू सितंबर जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून है वो मंथ क्या लेके आता है, रेन लेके। नाउ रेटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून।
During the month of October and November, southwest monsoon winds become weak and start to retreat from north. ये जो फेज ऑफ मॉनसून है इसे क्या कहता था? रिट्रीटिंग मॉनसून ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. इट लास्ट टिल अर्ली जनवरी. लास्ट करता है टिल अर्ली जनवरी. देखो यहाँ से क्या करती है? जून से मूव करती है, जून 5 से, और जाती है यहाँ पहुंच. ठीक है, जून 10 से यहाँ पे मूव करती है और यहाँ जाती है अरेबियन सी से. जून 15, जुलाई 15. ठीक है, ये सबसे पहले जून यहाँ मॉनसून लेके जा. The monsoon while traveling towards Indian Ocean picks up moisture. ये moisture pick करती है Bay of Bengal से और pour rain in peninsular India. The state of eastern coast are Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Odisha. They get less rainfall from southwest coast. इन्हें कम rainfall मिलती है और but receive heavy rainfall. जो retreating monsoon है, जो month of October, November से होता है, उससे यहाँ पे ज्यादा बारिश as compared to your southwest monsoon. Right? India's share is bounded with many countries. You have to name them. किस के साथ वो बाउंड्री शेयर करते? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल. Like this, you have to write the name. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.